हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ करण मशरू। वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक ट्री क्या होता है। ओके, सो ट्री इज़ बेसिकली अ स्पेशल टाइप ऑफ ग्राफ विच इज़ कनेक्टेड एंड विच इज़ असाइक्लिक। ओके, सो ट्री इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ ग्राफ, स्पेशल टाइप ऑफ graph which is connected and it is acyclic. Okay, so for example, if I draw a tree, so for example 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो दिस इज़ अ ट्री। ठीक है ना, तो ये पहले तो कनेक्टेड है ना, क्योंकि बिटवीन एवरी पेयर ऑफ नोड्स यू हैव अ पाथ एंड इट इज़ असाइक्लिक, कोई भी साइकिल नहीं है। ठीक है, सो ट्री इज़ अ स्पेशल ग्राफ विच इज़ कनेक्टेड एंड इट इज़ असाइक्लिक। ओके, सो वेन एवर द ग्राफ इज अ कनेक्टेड ग्राफ एंड इट इज़ असाइक्लिक, कुछ प्रॉपर मतलब मीन्स वेन इट इज़ अ ट्री देर आर सम स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रीज। ओके, द फर्स्ट वन इज इफ इट हैज़ n nodes एंड n-1 एजेस। अगर n नोड्स होंगे तो एग्जैक्टली n-1 एजेस होगी। जैसे कि यहाँ पे टोटल 10 नंबर ऑफ नोड्स है तो एजेस 9 होगी। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है ना, तो n-1 एजेस है हमारे पास विच इज़ इक्वल टू 9। अब आप इसमें एक भी एज ऐड करोगे तो साइकिल फॉर्म हो जाएगी। किसी भी दो नोड के बीच में एज ऐड करके देख लो, है ना, देयर वुड बी अ साइकिल। So it has n nodes and n-1 edges. Okay, second thing is between every pair of nodes there will be a path, obviously क्योंकि ये connected है, but between every pair of nodes you have a unique path. Okay, so between every pair of nodes there is a unique पाथ। किसी भी दो नोड्स के बीच में एक यूनिक पाथ होगा, मतलब कि आपको एक नोड से दूसरे नोड जाने के लिए अगर कोई पाथ चाहिए तो वो यूनिक होगा। फॉर एग्जांपल 6 से लेके 9 तक जाने के लिए ये एक ही पाथ है, 6 से लेके 7 तक जाने के लिए ये 6 2 1 3 7 ये एक ही पाथ है, 6 से लेके 5 तक जाने के लिए 6 2 5 ये एक ही पाथ है। whereas in graph between in general in graph between two nodes you can have multiple paths. for example अगर मैं यहाँ पे ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर दूँ 1 2 3 4 एंड लाइक दिस, तो 1 से 2 जाने के लिए 1 से 2 भी है और 1 4 3 2 भी है, बट देखो यहाँ पे साइकिल भी फॉर्म हो गई। दिस इज नॉट अ ट्री, राइट? सो बिटवीन एवरी पेयर ऑफ नोड्स यू हैव अ unique path. Okay, and it has n nodes and n-1 edges and it is a connected graph and it is acyclic. Okay, now whenever you define a tree it is a hierarchical structure. Okay, so it is a hierarchical structure with one node as a root node, as a root node. ओके, तो आपको यहाँ पे ट्री डिफाइन करने के टाइम आपको रूट भी डिफाइन करना पड़ेगा एंड हायरार्किकल स्ट्रक्चर है। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल इफ आई ड्रॉ दिस, देन इफ आई से दिस इज द रूट नोड, so from this node all the other nodes originate. Okay, and this can be used to represent hierarchical structure. For example, this is the owner of the company, then the whose employee id is 1, let's say, then people with employee id 2 and 3 directly report to him or her, then people with employee id 4 5 6 report to the person with employee id 2, and people with employee id 7 report to person with employee id 3. Then people with employee id 8 and 9 report to this person with employee id 6, and people with employee id 10, person with employee id 10 reports to this person 7, है ना? So this is a hierarchical type of structure, right? So or you can right, so that's one thing. तो एक तो hierarchical, जहाँ पे भी हमें hierarchical requirement है वहाँ पे हम इस तरह का data structure यूज़ कर सकते हैं। For example folder, file folder, है ना, file folder structure. For example
यू हैव अ फोल्डर हुज नेम इज 1, उसके अंदर 2 और फोल्डर है 2 एंड 3, फोल्डर 2 के अंदर 2 फाइल्स है 4 एंड 5, एंड एक और फोल्डर है 6, फोल्डर 6 के अंदर 2 फाइल्स है 8 एंड 9, फोल्डर 3 के अंदर एक फोल्डर है 7, फोल्डर 7 के अंदर 10 फाइल भी हो सकती है, फोल्डर भी हो सकता है, विच इज़ एम्प्टी फोल्डर, मतलब कि 10 अगर फोल्डर है तो उसके अंदर कोई आगे फाइल्स नहीं है. सो इट कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट हायरार्किकल स्ट्रक्चर जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है. ठीक है. So it's a special kind of a graph. Okay, so every tree is a graph, but every graph is not a tree, right? Now so basically this node is the root node. So you can say the nodes which directly originate from a particular node are the children of that node. So for example, I can say 2 comma 3 are children of 1. Okay, then 4 5 6 आर चिल्ड्रन ऑफ 2. तो जो नोड्स डायरेक्टली बिलो है, डायरेक्टली जो ओरिजिनेट हो रहे हैं वो उनको हम बोलेंगे चिल्ड्रन, एंड द नोड विच इज डायरेक्टली अबव इज नोन एज द पेरेंट. ओके, सो 2 इज पेरेंट ऑफ 4 5 6. ठीक है ना. सो दिस 2 इज पेरेंट ऑफ 4 5 6. सिमिलरली 3 इज पेरेंट ऑफ 7, 1 is parent of 2 and 3, right? So that is some more definition, children and parent. Now some more definitions. First is degree of a node. तो degree जो है वो tree में हम थोड़ा सा slightly different mention करते हैं as compared to a graph. In tree, degree of a node is the number of children of that node. Okay, so degree of a node is the number of children of that node. Okay, so that's a slight difference. So why am I telling this? Because आप कहीं पे पढ़ो कि degree of a node is the children, तो आप समझ लेना वहाँ पे ट्री की बात हो रही है ना. एंड काफ़ी बार लूजली टर्म्स में हो सकता है कि यहाँ पे अगर कोई बोल दे कि 2 ये एक ग्राफ है एंड 2 की डिग्री 4 है, देन इसको अगर एक जनरल ग्राफ की तरह मान रहे हैं, डिग्री 4 कह रहे हैं, सो यू लाइक देयर इज sometimes it is used in that way also. What I'm trying to say is, even though it's a tree, हम ग्राफ की तरह डिग्री काउंट कर रहे हैं, है ना. So basically so that is also somewhere, if that is there, don't worry. Okay, what I'm trying to say is कि ये specific distinction कि डिग्री में सिर्फ चिल्ड्रन मानने हैं या दोनों मानने हैं, इसकी वजह से अगर आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में इम्पैक्ट आ रहा है तो ये डेफिनेशन बहुत ही क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन्ड होगा कि आपको किस तरह से डिग्री कंसीडर करनी है. ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट. बट इन ग्राफ वी इन जनरल term or degree is the number of nodes number of edges connected to that node, and for tree we usually say it is the number of children of that node. तो आप कहीं पे पढ़ो तो you do not get confused, that's why I am telling this. Okay, so that is one more thing. Then there is something known as ancestors. So ancestors क्या होता है, जैसा कि हम कहते हैं कि हमारे ancestors, so we are talking about our parents, their parents and so on. So all the nodes which are on the path till the root node from a current node are the ancestor of that node. So parents up till the root node are called the ancestor of a node. Okay, so all nodes on the path from a node to root except that node itself are called ancestors of that node. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 6 के एंसेस्टर कौन है, 2 and 1. 10 के एंसेस्टर्स कौन है, 7 3 and 1. ओके, so that is ancestors. Similarly we also have descendants are children, then their children, and so on. Okay, so all the nodes, okay, so basically descendant से पहले एक और टर्म डिफाइन कर लेते हैं, सब ट्री. ओके, सो सब ट्री बेसिकली क्या होता है,
अगर एक ट्री है ना, तो उसमें हम किसी एक पर्टिकुलर नोड को रूट मान ले और उसके उस नोड को एंड उसके बिलो नोड्स, मतलब कि उनके चिल्ड्रन उनको कंसिडर करें, तो उनको हम एक सब ट्री बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल आई कैन से दिस इज अ सब ट्री रूटेड एट 2. ये भी ट्री की डेफिनेशन फॉलो करेगा. आप देखो यहाँ पे जैसे कितने नोड्स है, 6 नोड्स है, 5 एजिस होगी और ये कनेक्टेड है एंड असाइक्लिक भी है. देन आई कैन से दिस इज अ सब ट्री रूटेड एट 6. Okay, so what is the definition of subtree? So subtree is a tree rooted at a particular node, rooted at a particular node which includes the node, which includes that node and the children nodes रिकर्सिवली. अब रिकर्सिवली का मतलब क्या है कि चिल्ड्रन नोड्स, देन चिल्ड्रंस नोड्स सबको, है ना. सो सब ट्री रूटेड एट 2 हैज नोड्स 2, 4, 5, 6, 8, 9. सो चिल्ड्रन नोड, दियर चिल्ड्रन नोड एंड सो ऑन. ओके, then we have descendants. Okay, so descendants are of a particular node are all the nodes in its subtree except that node. Okay, so are all the nodes in the subtree rooted at that node okay except the node itself. Okay, so for example if I say what are the descendants of 2, so they are the children of 2, then their children and all of them. So 4, 5, 6, 8, 9 are the descendants of 2. ठीक है, so that is about ancestors, subtree, descendants. Then there is leaf nodes and internal nodes. So what are leaf nodes? The nodes which do not have any children further, or the nodes with degree 0 are called leaf nodes. तो यहाँ पे जैसे कि 4, 5, 8, 9 and 10, these are leaf nodes. Okay, so nodes which do not have any children okay are leaf nodes. These are called leaf nodes. Okay, their degree is 0. ठीक है, because we in tree we consider the degree of a node as the number of children. Then there is a definition, internal nodes. So internal nodes की definition क्या है? The nodes which are not leaf nodes are internal nodes, or the nodes which have at least one children are internal nodes. So for example यहाँ पे 1, 2, 3, 7 और 6 ये सारे internal nodes होंगे. Okay, so nodes or vertices which are not leaf nodes or nodes with at least one child are internal nodes. Okay, अब जो root node होता है वो भी internal node ही होता है, except the case when root node is the only node itself in the tree. Okay, so root node is also internal node except for the case when it is the only node in the tree. So basically यहाँ पे भी रूट नोड जो है वो इंटरनल नोड ही है, लेकिन अगर मान लो मेरी ट्री में सिर्फ एक ही नोड है तो ये रूट नोड है बट ये लीफ नोड भी है क्योंकि इसके कोई चिल्ड्रन नहीं है, राइट.
so it is not an internal node. Okay, otherwise when there are more than one nodes, so obviously root node will be an internal node. So we talked about internal nodes, leaf nodes, descendants, subtree, ancestors, degree, then parent, what is a children, it is a hierarchical structure tree, and the definition of tree, some properties of tree, right? So that's the introductory part about tree. I hope आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा. नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चीज़ें देखेंगे अबाउट ट्री, एंड देन वी विल probably move on to the implementation part like storing of graph traversal, then some questions and so on. I hope आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा. थैंक यू.